Good evening, sir. I am Ritika Chahar from BA third semester is going to present a presentation on disaster management. A disaster is a defined and a disruption on massive scale, either natural or man-made. There are natural disasters like earthquake, volcanic eruptions, and also man-made disasters. The Disaster Management Act of 2005 defines disaster management as an integrated process of planning, organizing, coordinating, and implementing measures which are necessary to prevent of any threat of any disaster, reduction of any risk to any disaster, readiness to deal with any disaster, promptness in dealing with any disaster, assessing the severity and effects of any disaster, rescue and relief, and rehabilitation and reconstruction. The last is District Disaster Management Authority. The DDMA is headed by the District Collector, Deputy Commissioner of District Magistrate, depending on the situation, with the elected representatives of the local authority as the co-chairperson. Thank you. Hello everyone, this is Ruchika Lal from BA Department and I'm here to give a presentation on Disaster Management Planning of India. So let's begin. The very first question that comes from here is what exactly is a disaster? So let's first know about this in a technical way. Okay, a disaster is a hazard causing significant physical damage or destruction, loss of life, drastic change to the environment. Right. Now let's take this whole statement in a very simpler way. A disaster is a very serious problem occurring over a period of time that causes severe brutal damage to mankind, economic and environmental damage as well. So a disaster can brutally affect a country or many countries. Okay, so moving forward, now we'll see there are two types of disasters. Okay, one is natural disaster, second one is man-made disaster. So this was the basic. Now see the Management Committee of India. Okay, NDMA, National Disaster Management Authority of India. Okay, so you guys must be wondering about how the logo looks like of National Disaster Management Authority. So I'll show you. This is the logo of NDMA. All right, our Prime Minister has established this in India 2005 to look after all these destructions and to lessen the impact. I hope this video has been useful. Good evening, sir. I, Kritika Chahar of BA third semester, is going to present a PowerPoint presentation on disaster management. A disaster is defined as a disruption on a massive scale, either natural or man-made. There are various categories of disaster as given in the following, like water and climate disaster, geological disaster, biological disaster, industrial and nuclear disaster, and man-made disasters. The Disaster Management Act of 2005 defines disaster management as an integrated process of planning, organizing, coordinating, and implementing measures which are necessary for preventing of threat of any disaster, reduction of risk of any disaster or its consequences, readiness to deal with any disaster, promptness in dealing with a disaster, assessing the severity of the effects of any disaster, rescue and relief, rehabilitation and reconstruction. Proper planning and mitigation measures can play a leading role to minimize the worst effects of the hazards such as cyclones, earthquakes, and the key areas which should be addressed to achieve objectives are risk assessment and vulnerability mapping, increasing trend of disaster in urban areas, critical infrastructure, environmentally sustainable development, climate change, and adaptation. Thank you. Good morning, teacher. My name is Mohammed Zubair and I am a student of BA third semester and I am making this video for my assignment of geography and my topic is Ganga Action Plan. So Ganga Action Plan, इसको शॉर्ट में GAP भी बोलते हैं, इसको स्टार्ट किया था 1986 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ राजीव गांधी। गंगा एक्शन प्लान को हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 वही है जो इनिशियली जिस टाइम पे ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, यानी कि 1986 में। इस फेज 1 में
3 स्टेट्स को कवर किया गया था इस स्कीम के अंदर, जो इंक्लूड करते थे उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। एंड दूसरा फेज स्टार्ट होता है 1993 में। इसके अंदर 7 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया था: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली एंड हरियाणा। ऑब्जेक्टिव्स थे गंगा एक्शन प्लान के, वो थे इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी, यानी कि जो रिवर गंगा का वाटर है उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करना, इस हद तक इम्प्रूव करना कि वो बाथिंग, नहाने के बेसिक यूजेस के काम आ जाए। एंड सीवेज इंटरसेप्शन एंड वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी। सीवेज इंटरसेप्शन यानी जो गंगा रिवर है या उनकी जो और ट्रिब्यूटरीज हैं उनके अंदर जो सीवेज गटर का पानी जाता है उसको इंटरसेप्ट करना यानी रोकना, और वाटर ट्रीटमेंट प्लेस बना देना जिससे उस पानी का ट्रीटमेंट हो सके और वो थोड़ा क्लीन कर सके या रिसाइकल कर सके। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स गंगा एक्शन प्लान के। थैंक यू। Good morning, sir. Good morning, ma'am. I am Kunal Dupe, and I am pursuing the Bachelor of Art from the St. John's College, Agra. And I am the tutor topic is the disaster management. The disaster, as defined by the United Nations, is a serious disruption for the functioning of the community or society, which involve a widespread human, material, economic, or environmental impacts that exceed the ability of the affected community of the society to cope using its own resources. The disaster management is how we deal with the human, material, economic, environmental impact of said disaster. It is a process of how we prepare for, respond to, learn from the effect of the major failures, though often caused by the nature disaster, can have a human origin according to the International Federation of Cross. And a disaster occurs when a hazard impacts on vulnerable people. The combination of the hazard's vulnerable and inability to reduce the potential negativity consequences of the risk and result in the disaster. Thank you. Good evening. My name is Sanjana Bhardwaj and I'm a student of Geography, BA third semester. And today I'm here to present a presentation on the topic Ganga Action Plan. This video is going to be bilingual in Hindi, English both. गंगा एक्शन प्लान GAP के नाम से भी जाना जाता है। गंगा एक्शन प्लान जो है वो बहुत बड़ा एक पॉलिसी है गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए। इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो जो गंगा एक्शन प्लान की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि जो गंगा रिवर थी वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और भी कई सारे रीजंस थे उसमें, जैसे कि ओपन सीवेज ड्रेनेज उसमें जो था वो था, एंड इंडस्ट्री के जितने भी वेस्ट थे वो विदाउट ट्रीटमेंट उसमें डंप किए जाते थे। द प्रॉब्लम अराइज्ड व्हेन द गंगा पॉल्यूशन इज़ हेवीली polluted, and several efforts were made by the government, and hence the Ganga Action Plan launched in 1985, and जितना भी pollution है उसे अबेट किया जाए गंगा से, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। एंड इन 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे एक्शन प्लान भी लॉन्च किया है गंगा जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए, एंड इट वाज स्टार्टेड इन जून 2040। इसमें और जून 2040 में जो बजट प्रेजेंट किया गया था उसमें ये लॉन्च किया गया था। Until 2016 एस्टिमेटली 3000 crore was spent in Namami Gange action project. So thank you. Morning to all. My name is Shubhi Yadav of BA 3rd Sem. Today I am going to present a PPT in geography on the topic objective and achievements of the Ganga Action Plan. So let's start our topic. What is Ganga Action Plan? Ganga Action Plan was a program launched by our former Prime Minister Rajiv Gandhi ji in April 1986 to reduce the pollution load on Ganga. It is a centrally sponsored scheme to improve the quality of water in River Ganga. And next, what are the objectives of Ganga Action Plan? So, the objectives of the Ganga Action Plan is to improve the river water quality by preventing
diversion, and treatment of domestic sewage and industrial waste entering the river Ganga. At last, I want to say that Ganga doesn't remain just a symbol that will become a part of our daily life and become a part of the future of India. It holds our spirituality and our tradition. That's all for today. Thank you and have a nice day. राम राम भाई सारे आने। आज हम सब द गंगा एक्शन प्लान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम गंगा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानना चाहेंगे। जैसे कि गंगा नदी की मूल जानकारी। उत्तराखंड राज्य में पश्चिम हिमालय से निकलती देवप्रयाग में दो प्रमुख धाराओं अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनती है। गंगा नदी प्रणाली की सहायक नदियों के साथ गंगा को गंगा के रूप में भी जाना जाता है। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अब हमारा यहाँ से गंगा एक्शन प्लान के बारे में टॉपिक चेंज होता है। गंगा एक्शन प्लान के बारे में 14 जनवरी 1986 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा प्रदूषण को कम करने और गंगा नदी की जल गुणवत्ता में सुधार के मुख्य उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। गंगा एक्शन प्लान एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत परियोजना की कुल लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। गंगा एक्शन प्लान के तहत गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण NRGBA नामक एक नए निकाय का गठन किया गया था। गंगा एक्शन प्लान परियोजना को प्रारंभिक चरण में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। गंगा एक्शन प्लान परियोजना को 2 चरणों में लागू किया गया था। गंगा एक्शन प्लान का पहला चरण 1985 में शुरू हुआ और 2000 में समाप्त हुआ। परियोजना के चरण में 1 में 3 राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल थे। गंगा एक्शन प्लान का चरण दूसरे में 1993 में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे 7 राज्यों को कवर करते हुए शुरू किया गया था। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा आदि। Myself Gulshan Yadav from BA third semester. My topic is Ganga Action Plan 1985. The Ganga Action Plan was launched in 1985 by Sri Rajiv Gandhi, Prime Minister of India. The idea of cleaning river Ganga was initiated by the government of India in 1979. However, the Ganga Action Plan could only be initiated in 1985 after a comprehensive survey on the river Ganga by CPCB, that is known as Central Pollution Control Board. The Ganga Action Plan is 100% centrally sponsored scheme. Under this plan, the National River Ganga Basin Authority was established and the river Ganga is declared as the National River of India. Ganga Action Plan was divided in 2 phases. In first phase, it covered 3 states, UP, Bihar and West Bengal. It was the first attempt of central government to clean the river Ganga. And second phase is launched in 1993. The purpose of second phase is mainly clean the tributaries of river Ganga. Main objective of Ganga Action Plan: to improve the water quality by the interception and diversion and the water treatment of river Ganga. And secondly is removal of chemical and industrial wastes from the water of river Ganga. It also gave the importance to conservation of biodiversity. Ministry of Environment and Forest was made in charge of overall design and implementation of Ganga Action Plan. Central Ganga Authority came into existence under the Environment Protection Act 1986, headed by the Prime Minister of India. Thank you. Good morning to the respected teacher. I, Uruj Nasir of BA third semester, is going to deliver my presentation on the very topic Disaster Management Planning in India. So let's start. Management planning in India.
तो डिज़ास्टर होता क्या है, ये हमारा यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया कि ये होता क्या है। कोई भी ऐसा कैटास्ट्रॉफ या कोई भी ऐसी कैलेमिटी जिससे सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ होता है, ह्यूमन सफ़र करता है और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसको हम डिज़ास्टर कहते हैं। ठीक है, तो डिज़ास्टर कोई भी अनयूजुअल चीज़ हो रही है जिससे डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ हो रहा है और प्रॉपर्टी हो रही है स्पेशली, तो उसको हम डिज़ास्टर कहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे टाइप्स के डिज़ास्टर्स होते हैं, ये हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स में आ जाएंगे। देन इंडस्ट्रियल मिसहैप्स, ये हमारे मैन में डिज़ास्टर्स आएंगे। एंड रेल एक्सीडेंट वगैरह ये भी हमारे आर्टिफिशियल डिज़ास्टर्स में ही आएगा, जो कि मैन के थ्रू ही हो रहा है। तो ये हमारे डिज़ास्टर्स होते हैं जिससे लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है। व्हाट इज़ सेकंड डिज़ास्टर? सेकंड डिज़ास्टर क्या होता है? तो सेकंड डिज़ास्टर की अगर हम बात करें तो सेकंड डिज़ास्टर वो होता है जिससे जो पहले डिज़ास्टर आ गया और उसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा रिलीफ वर्क नहीं है कि हम उस डिज़ास्टर की सीवियरिटी को कम कर सकें, तो वो हमारा सेकंड डिज़ास्टर क्या कहा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी डिज़ास्टर आ चुका है और हमारे पास उसको कर्व करने के लिए हमारे पास कुछ भी चीज़ नहीं है, तो वो हमारा सेकंड डिज़ास्टर कहा जाता है। तो इंडिया में नेचुरल डिज़ास्टर्स हर टाइप के आते हैं। अभी हमने बात करी साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, ये सभी मेजर थ्रेट है इंडिया के, और ये तो नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए। इसके अलावा काफ़ी बड़े बड़े डिज़ास्टर जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारी 1984 में हुई, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे यहाँ पे, वही है जो काफ़ी लोग उसमें मारे गए थे, हमारे मैन मेड कैटास्ट्रॉफ्स हैं। तो इसी तरीके से हम देखा, एक हमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट था जो नेशनल लेवल पे सारी चीज़ें कर रहा था। हमारे पास स्टेट लेवल पे भी आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही वो वर्क करता है, स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है ना। उसके अंदर एनडीएमए है और एनडीएमए के अंदर एसडीएमए काम करता है, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, रिलीफ कमिश्नर, मतलब सारे इसमें डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, किस तरीके से ही आते हैं। तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान, ये दो टाइप्स के प्लान होते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है और एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। पेमेंट्स सारी चीज़ें हैं हमारे पास। सम अप करने के लिए हम ये बोल सकते हैं, कंसर्न क्या है कि कोई भी डिले हमें नहीं करना है, रिलीफ प्रोवाइड करते में कोई भी बैड पब्लिसिटी नहीं करनी है हमें, इतनी सारी डेथ्स हो गई हैं, और एम्पैथेटिक इंटरनल एटीट्यूड्स रखने हैं और प्रॉपर फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो दैट्स ऑल, हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमने इतना ही पढ़ना था। थैंक यू। दैट इज़ ऑल अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग इन इंडिया। थैंक यू। Hello, today I, Aksar Khalid, is going to highlight few but very important information about Ganga Action Plan. Ganga Action Plan was started on 14 January 1986 with the objective of pollution abatement from river Ganga. Ganga Action Plan is a 100% centrally sponsored scheme. Under this plan, the National River Ganga Basin Authority was established and declared Ganga as a national river of India. So if I talk about its phases, there are total two phases, phase 1 and phase 2, where phase 1 was set with a budget of 350 crore with 35% of the sewage generated was tackled, including biochemical oxygen demand, which came down from 12% to 4%. Whereas in phase 2 it was set with a budget of 1498.66 crore with 60% of the sewage generated was tackled, in which biochemical oxygen demand was remained static. The importance of Ganga Action Plan are: it is the most sacred river to Hindus. Also, it is the world's oldest continuously inhabited places along its bank. It is the largest river basin in the country. It houses around 40% of the total population of the country. From Haridwar, it flows first to the southeast, then to the west, before splitting into the two distributaries, namely Bhagirathi and the Hooghly River. The river has a length of about 2,525 km. It is shared by Uttarakhand and UP, Bihar and West Bengal. The Ganga basin covers about 8.6 lakh square kilometer in India alone. So this was all about a short and a quick recap of Ganga Action Plan. Thank you. Have a nice day ahead. Good morning, sir. My name is Pragati Kumari and I am the student of BA 3rd semester. Today, I will be address a crucial aspect of our nation's security and resilience, that is NDM, stands for National Disaster Management. In a world where natural calamities and unforeseen emergencies pose constant threat to our communities, it is imperative that we prioritize proactive measures to mitigate the risk and enhance our preparedness. As a citizens, we all have a role to play in national disaster management, whether it's volunteering with a local disaster relief organization
or participating in preparedness workshop, or simply staying about potential risk, each of us can contribute in building a more resilient nation. In the conclusion, national disaster management is not just the governmental responsibilities. It is an endeavor that requires commitment and cooperation of all the sectors of society. By investing in preparedness, prevention, mitigation, recovery, and response, we can better make our community or ensure a safer and more secure future to our generations. Thank you. Hello everyone, it's me Mantasha Khan from BA 3rd semester. My presentation topic is Disaster Management Planning in India. The disaster is a sudden calamitous event bringing great damage, loss, destruction and devastation to life and property. Damage caused by disaster is immeasurable and varies with the geographical location, climate and type of the earth's surface. This influences the mental, socio-economic, political and cultural state of the affected area. Generally, disaster has the following effects in the concerned areas. It completely disrupts the normal day-to-day life. It negatively influences the emergency systems. Normal needs and processes like food, shelter, health, etc. are affected and deteriorated depending on the intensity and severity of the disaster. It may also be termed as a serious disruption of the functioning of society, causing wider spread. Human, material and environmental losses which exceed the ability of the affected society to cope using its own resources. Disaster management is effective organization, direction and utilization of available counter-disaster resources. The modern view is there must be pre-disaster mitigation measures to avoid or reduce impact of disasters. Pre-disaster measures to prevent or mitigate disaster called disaster risk. Thank you. Today, we're diving deep into the science of climate change and exploring the crucial role of climate action in combating this global crisis. Ever wondered how our planet is being affected by rising temperatures and extreme weather events? Let's start by understanding the basics of climate change. It's not just about hotter days or melting ice caps. Climate change refers to long-term changes in temperature, precipitation, and other atmospheric conditions that result from human activities, such as burning fossil fuels and deforestation. The science behind climate change is clear. Greenhouse gases like carbon dioxide trap heat in the Earth's atmosphere, leading to a phenomenon known as the greenhouse effect. This warming effect is causing sea levels to rise, glaciers to melt, and ecosystems to shift, threatening biodiversity and the well-being of all living organisms on Earth. So, what can we do about it? Climate action is the key to addressing climate change and mitigating its impacts. This involves reducing our carbon footprint, transitioning to renewable energy sources, protecting forests and wildlife, and advocating for policies promoting sustainability and environmental justice. Action is the key to addressing climate change and mitigating its impacts. Individuals, communities, businesses, and governments all have a role to play in taking decisive climate action. From driving electric vehicles to supporting clean energy initiatives, every small step counts towards building a more sustainable future for generations to come.
We've already seen the devastating effects of climate change in recent years, from record-breaking heat waves to catastrophic storms. It's time to act now before it's too late. Together, we can make a difference and create a more resilient and thriving planet for all. Remember, the power to combat climate change is in our hands. Let's work together to protect our planet and ensure a healthier and more sustainable future for all.